अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 5 मार्च मंगल का रोज एंड we have a guest lined up. We have a British-Pakistani journalist who's been living outside of Pakistan for the past few years. We'll get her in. Her name is Mehr Husain. But before that, some breaking news coming from Pakistan. कुछ घंटे पहले इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान ने फाइनली एक माह गुजर जाने के बाद इलेक्शंस के फॉर्म 45 वो कंट्रोवर्शियल फॉर्म्स जो अभी तक वो अपलोड नहीं कर पा रहे थे वो फाइनली अपलोड किए और अपलोड करते ही साथ जो रिएक्शन आया उसके बाद वो फॉर्म्स डिलीट हो गए। एक्चुअली लग तो ये रहा है डिलीट हो गए मगर इनएक्सेसिबल हैं ईसीपी की वेबसाइट पे। जो जब तक वो ऑनलाइन थे फॉर्म्स तो उसके ऊपर बेसिकली वाइटो से ब्लैंको से दे हैड ब्लैंक्ड आउट नंबर्स, दे हैड चेंज्ड नंबर्स giving wins to people. Nawaz Sharif का फॉर्म निकला था और जगहों से भी it looked like a complete disaster. यानी इतनी कंपल्शन होनी कि इस चीज को पब्लिश किया जाए और फिर उसको पब्लिश करने के बाद जब चीज वाज़ेह हो जाए कि भाई ये तो भंड हो गया, ये एक बहुत बड़ा, डिलीट कर दें। इस मौजू पे ही बात करेंगे और मौजूआत पे ही बात करेंगे। Mehr F. Hussain joining us from the UAE. She's been an editor with the Friday Times for many years. The Friday Times has been a source of information for many Pakistanis for many years, but in the past few years, it has definitely taken a position. Let's just say that. Is that a fair characterization, Mehr? Ji, Assalamu alaikum Ali. Thank you for having me here. I'm delighted to be here. Bilkul, absolutely. The Friday Times was established in the 80s as a source of liberal thinking, as a source of information, authentic reporting, and of course, something to uphold the freedom of the media. I've been associated with the Friday Times since 2007. I then left later on and I returned in 2022. And I suppose since then, for the past 2 years, you'll see that the Friday Times has done very well in maintaining its stance in upholding free and fair media. And of course, well, the first thing you mentioned is the Friday Times was created to promote liberal thinking. Explain absolutely. that a bit. I think And in what do you Pakistan, even mean by liberal now in this day and age? absolutely. I think in Pakistan, we tend to confuse liberal with modern and progressive. Liberal thinking basically comes down to respecting people's way of living. You can live your life the way you want to live, as per the Constitution. I can live my life the way I want to live. And there is absolutely no clash. There is no room for majoritarianism or populist thinking. There is, when I talk about liberal in a Pakistani context, I'm talking about paving the way forward for progressive thinking, for a progressive way of living, and to ensure that Pakistan's best interests are always at the forefront. You said against majoritarianism, but हमने पिछले कुछ माह में 1.5 साल में देखा tyranny of the minority भी तो चल रही है पाकिस्तान में, and with quite a liberal bent, एक criticism ये भी रहा है कि भाई minority elite यानी आपके जो guardians of liberal thought हैं, they've been at the forefront of cheerleading this crackdown on civil liberties over the past year and a half. I'm not so sure I agree with that because post-partition, many liberals did end up leaving Pakistan over the years, right throughout the 70s and the 80s. And in the 90s, I suppose, are perhaps the closest that we could have to a more free and fair Pakistan, although, of course, the 90s had their fair share of problems. And then since General Musharraf, what we've seen is a decline of civilian supremacy to the point where it's completely eradicated. With regards to who you consider the liberal leaders, I'm not so sure I'd agree with them because if you look at the way minorities have been treated over the years, the Friday Times was the only one and at the forefront of reporting these atrocities that were being conducted against minorities of all kinds. I don't mean minorities. I'm getting to that. I'm getting to that, yes. But I think one of the things that we've consistently fought for is raising awareness about how people have been targeted. We have been at the forefront for fighting for all political parties, for all members of the state. And we've been very clear that we are not choosing one particular side. Since 2022, especially since I joined, like you very clearly mentioned, we've been advocating for freedom and we've been saying repeatedly
that it's a slippery slope. You see, you start with one person, Ali, that's it. It goes on. And that's where majoritarianism comes in. Because once you start with one person or one entity, one group, one party, you've lost space. You've lost that civil liberty. And once that begins, you and I, we are equally here. Now, in a political context, this is where the element of populism and majoritarianism has got to be stemmed, what we're seeing today, and has a spillover effect. You saw the Ichra incident. Why is this happening? This is happening because people are beginning to feel frustrated. What they're seeing is an element of where I can take control of a situation. There are no consequences. There's no reporting on it. There's absolutely no accountability for it. So you see, it's very important to continue to pave with the way forward for progressive politics. And that ultimately leads to rule of law, that leads to equality, that leads to awareness amongst society that you cannot behave in such a manner. And you do need to respect how others live. And they should respect how you live. So let's take that Ishra incident and try to dissect it, right? Yeah. इस इंसिडेंट के अंदर एक खातून जाती है एक मार्केट के अंदर, वहां पे उन्होंने लिबास पहना होता है जिसके ऊपर हलवा लिखा है, अरबी, एक बहरेनी कोई डिजाइनर था जिसने डिजाइन किया, and then she goes in and then she starts being followed by these, for the lack of a better word, fanatics, जो कहते हैं कि भाई तुम तौहीने कुरान कर रही हो, इसके ऊपर वर्सेस लिखी है कुरान की जो नहीं लिखी हुई थी, और एक मॉब गैदर होता है रेस्टोरेंट के अंदर, वो घुसती है, उनको रोकने की कोशिश करते हैं, and then this savior, this female savior police officer, her name is Shehbaz Naqvi, comes in and like calms the crowd down and drags this woman out and covers her and takes her to the police station where she mediates a way out. That's one part of the story. सही है, और उसको हर कोई हेल कर रहा है कि जी savior, women's rights, so on so forth, so on so forth. Yeah. But then once it blows up, this story, पता लगता है कि भाई ये तो वही पुलिस ऑफिसर है जो 9 मई के ऊपर इसकी तस्वीरें, वीडियोस आती हैं कि she's, you know, manhandling civilians, putting them in cars, women, men, whatever, just for the sake of protesting. Yeah. So I guess it kind of lays bare कि एक तरफ तो हम, you know, एक नोबल चीज की तरफ जा रहे हैं, मगर दूसरी तरफ इतना एक बर्बरियत आप कह लें, फैशिज्म आप कह लें, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, that doesn't care if you're a man or a woman, but it's going after what many consider to be a wide segment of society now, especially after these elections. No, absolutely. That's an excellent question. I'm so glad you brought it up. First of all, the two incidents, May 9th and the Ichra incident, they cannot be compared. Anyone even conducting a comparison clearly fails to understand that these are two different situations and they have different implications, not just for the state, not just for politics, but for society and religion as well. So I wouldn't draw a comparison between the two. I think they're two separate incidents. They're two separate incidents, but I was talking about the savior in one as well, allegedly a villain in the other, the same individual. Again, not going to engage in simplistic analysis here. I'm going to go into a very specific thing. Number one, when you have two different situations, you have to react accordingly, right? We agree upon that. Secondly, the police is a tool of the state. It is there to maintain law and order. Now, if those are the orders that are being given by the state, you cannot put the blame on one single person. That's simply unacceptable. And that's so wrong. And it's dangerous for that young girl. Us bachchi ka kya kasoor hai? Shehbano ka kya kasoor hai? Agar usse order aa raha hai ki aapne 9 May ko is tarah apni duty karni hai, if anything, let's appreciate the fact that she's actually doing her job. And it's not easy to do your job as a public servant, as a police officer in Pakistan, right? May 9 May ko, she was doing her job. Ichra incident mein, she was doing her job. अगर आपने कंपैरिजन करना है, अगर आपने दोनों को लिंक करना है, in both cases, on 9th May, if there's a mob and you have to control it, that's what she was doing. In the Ichra incident, there's a mob, you have to control it, she's doing her job. Now, whether you want to talk about whether this is 9 May ko she was going against the PTI, or Ichra incident mein she was going against jo Islam ke alam bardar bante hain, to फिर that's down to how you see it. And one will respect that. One may not necessarily agree with it, but one will respect that. Well, now, you and I can respect it. I can bring the nuance to the situation. But jo aurtein
महीनों तक जेलों में रही, पीटीआई की हो नहीं हो, एक्टिविस्ट भी थी, कुछ का कोई ताल्लुक नहीं था उससे. I'm sure they would beg to differ with the I nuance. don't. They wouldn't I accept the no. nuance as I readily. don't think I agree. They may beg to differ with nuance, but you see, Ali, the question you've asked is कि शहरबानो तो वही खातून है ना? That was your question. शहरबानो वही एक खातून एक तो स्टे, है. एक स्टेट एपरेटस का हिस्सा है, उनको स्टेट ऑर्डर्स apparatus मिले का हिस्सा और है तो उन्हें ये हाँ, ये कहना कि शहरबानो ये वही वाली शहरबानो है तो ये बहुत ही खतरनाक जुमला आ जाता है और इसका हमें बहुत ख्याल करना चाहिए. And I know you understand this. I know you realize this as well. That you can't blame 9th May on Shehrbano and then say no, कि of वो she course was not. of course not. Listen. That's What a you know state this. does overreach and whatnot, eventually it's a system, right? You know what's A system interesting? made of No, individuals. no. I'll tell you what's interesting, and I'm so glad you've asked this question again because 9 मई में अगर हम देखा जाए तो स्टेट का क्या रोल था और जो इचरा इंसिडेंट था द फैक्ट दैट इट टुक प्लेस भी आप लोग कौन होते हो एक औरत के लिबास में बात करने के लिए एक तरफ Agreed. हमारा Agreed. एक औरत अपने बाप की जिम्मेवारी है एक औरत अपने खावन की जिम्मेवारी है अगर वो औरत अपने घर से निकल रही है और उसके बाप ने उसके लिबास पे सवाल नहीं उठाया उसके भाई ने उसके लिबास पे सवाल नहीं उठाया उसके खावन ने उसके लिबास पे सवाल नहीं उठाया अगर शी हैज चिल्ड्रन उसके बेटे ने उसके लिबास पे सवाल नहीं उठाए तो आप कौन हो आप कौन होते हैं? ठीक है इन द सेम वे यही हरकतें अगर स्टेट एलिमेंट्स करती हैं जो हमने देखा है कि स्टेट एक्सप्लॉइट करती है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को तो बात वही आ जाती है कि इसमें शहरबानों का कसूर नहीं है या शहरबानों की ड्यूटी नहीं बात आ रही है कि जी स्टेट का क्या रोल है इसमें और स्टेट की भी जब हम बात करते हैं कि जी स्टेट के कौन से एलिमेंट्स हैं क्या हम सियासी जमातें देख रहे हैं सियासी जमातें अगर हम देखेंगे अली मुस्तफा तो all political parties are complicit in creating the incidents that led up to May 9th, as well as the Ichra incident. You see, in both situations, state, political Parties and other elements of the state. That's what I'm saying. So when you talk about the state apparatus, what are we referring to? State, to mere khayal se it's become such an umbrella term, and yet ideally, okay, let's try to dissect it, right? Let's talk about what do we mean by this umbrella term in the current context, right? Yeah. कि हम establishment की भी हम ये बड़ी चीजों की बात करते हैं इसके असली मायने क्या है स्टेट के अंदर क्या है स्टेट के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी है जी एक सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी है स्टेट के अंदर अफवाज पाकिस्तान है स्टेट के अंदर पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं राइट तो ये तीन एलिमेंट है स्टेट के अंदर मीडिया भी है मे बी कुछ हद तक एब्सोल्युटली नहीं बिल्कुल है फिफ्थ पिलर बिल्कुल है इसमें गॉन तो मैं वही बात कर रही हूँ कि अगर 99 से लेके जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक सिविलियन सुप्रीमेसी तो हमने देखी ही नहीं है यानी हमने तो मे बी 1956 से 1956 से लेकिन बीच में वही मैं कह रही हूँ ना पोस्ट ज़ियाउल हक आया तो था ना एक दौर लेट 80s 90s का अप टू 99 जहाँ पे वो टसल चल रही थी बिटवीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एंड बिटवीन द डेमोक्रेटिक पार्टीज वो तो चल रही थी लेकिन 99 से लेकर अब तक टू मॉडर्न डे aborted stage managed by the military or the establishment एक टसल चल रही थी where there's no civilian supremacy and you have elements who are experimenting who are tinkering you're bound to get these gaps where then civil society is going to start exercising their majoritarianism. And the other point is that when you have tinkering and you have experimenting and you have the creation of non-democratic elements coming in, pretending to be saviors and promising a new country or promising a Riyasat Medina or saying कि जी ये नया पाकिस्तान है या पुराना पाकिस्तान है ये old Pakistan है let's go back to where things were. Ali, we've seen and suffered a lot of it. You've seen and suffered. I've seen and suffered, right? And the one thing we need to recognize is that this populism, it's weakening us day by day. At this point, we need to recognize चलो that मैं मानता हूँ चलो I'll admit that populism is weakening us, but the reaction to contain that populism, that pendulum swing the other way is destroying us essentially as well. I will agree to that. I will agree to that completely. Corrective measures कहाँ जाते हैं किधर हम अपना यानी बैलेंस ढूंढते हैं यहाँ आएंगे अगर आपके जो और अगर आज इमरान खान एक लाइटनिंग रॉड बना हुआ है फॉर एग्जांपल एक लाइटनिंग रॉड बना हुआ है लोगों की उम्मीदें उसके साथ लगी हुई हैं वोट डाला उन लोगों ने जाके आई एम श्योर हर कोई अपना यानी आप और मेरी तरह ही सोचता होगा महर नहीं इसमें देखिए नॉर्मल इंसान तो
नहीं, Go on. पीटीआई के साथ ज्यादती हुई थी. इट वाज नॉट अ लेवल प्लेइंग फील्ड एट ऑल इन दिस इलेक्शन. पीटीआई के साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर एक बात करना चाहूंगी कि पीटीआई के दौरान जो जुल्म हो रहा था हम उसके खिलाफ ही बोले थे. पीटीआई के साथ भी जो जुल्म हुआ था हम उस पे भी बोले थे कि ये गलत है. फर्क ये आ जाता है अली, फर्क ये आ जाता है. इट्स नॉट बाय Hindsight is टेकिंग. always 2020. मगर देखे ना, अब No, अपना हमें it's अंदाजा not. होता I है. know. I'm sorry. Hindsight की बात नहीं. The work speaks for हाइंडसाइट की itself. बात भी है, और नहीं, ऑफ No. कोर्स अपना अगर मतीउल्लाह जान उठा था, अगवा हुआ था, उसके लिए बोले थे हम उस वक्त. असद तूर पे हमला हुआ था, उसके लिए भी बोले थे हम उस वक्त. जो इमरान खान बातें कर रहे थे इन फेवर, नॉट इन फेवर, उसके ऊपर भी बात हुई थी. बट एट द एंड ऑफ द डे एक्चुअली अब हमें आके पता लगता है कि जितनी नफरत, जितनी इंटेंसिटी और ईगो के साथ लोगों को टारगेट किया जा रहा है. इमरान खान तो चलो टारगेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जेल में नहीं है. लोगों के ऊपर आपने उनका मैंडेट क्रैकडाउन हुआ. चोरी हाँ, किया या वो गलत था. क्रैकडाउन हुआ है, वो उसका गलत था. इमरान खान पीटीआई से एज सच कोई ताल्लुक महर मेरे ख्याल से है एक हद वो तक. बट वो इट गोज क्रैकडाउन बियॉन्ड इट. वो क्रैकडाउन और एंड आई लाइक टू से माय वर्क इज ऑन रिकॉर्ड है. उसमें भी आई थिंक आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस टू राइट कि एनीथिंग दैट गोस अगेंस्ट द पीटीआई वेदर इट्स डिसमैंटलिंग इट और बैनिंग इट इज रॉन्ग. It is wrong. This is not the way to do it. And going back to your question, कि opposition की तरफ से जो reaction हुआ है वो भी सही नहीं है. वो सही नहीं. आपने इलेक्शन की बात की थी, आपने ईसीपी की बात की है. बिल्कुल जिन जिन हलकों में धांधली हुई है आप खोलें, हम बैठे, आप खोलें, हम दिखाएं, हम रिपोर्ट करने की तैयार हैं. हमारा तो काम है कि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना. लेकिन if at the risk of populism and at the risk of furthering, the polarization, that's where somebody needs to take a seat back and say, hang on a second, let's think about it. Let's work together. And that's where we are. अब वहां पे बहुत कम लोग हैं. अगर कोई है, that's the other thing, right? इतनी इंटेंसिटी हो गई है, रिएक्शनरी सियासत हो रही है, लेकिन प्रोग्रेसिव सियासत तो कोई नहीं हो रही ना अली. हमारा कौन जा रहा है? आम आदमी. जो आपने इलेक्शंस में देखा था कि जो इंडिपेंडेंस खड़े हुए थे, ना उनके पास फंड्स थे, ना उनके पास रिसोर्सेस थे, उसके बावजूद 100 सलाम मैं करती हूँ कि वो इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं. एंड they won. You know it, I know it, they won. आगे जो उनके साथ हुआ है, अब now we need to find a way forward. How do we address this? And most importantly, how do we work with society? The Ichra incident is not just about a woman's clothing. It's an insight into how people are thinking, and we're at a very, very dangerous point right now. If something like this can Absolutely. happen on So an item of how are clothing, these people thinking? Tell us about that. What's that mindset in your mind? I think that mindset is about taking back control. Taking back control. If you have a mandate that has been supposedly stolen, if you feel you don't have a say in your own country, you will do anything and everything to take back that control. And the easiest way to do it, औरत पे, बच्चे पे, जानवर पे आप कोई हमला करोगे, it comes from a lack of control. It comes from a lack of that feeling of helplessness, hopelessness. When you have that situation, देखिए हमेशा पाकिस्तान का होता था कि democracy is built on a rational school of thought. You vote according to what you think is right or wrong, what you think is going to work best for you, best for your children accordingly. पाकिस्तान में हमेशा होता था कि cultural school of thinking से आप आ रहे हो. जी कौन सी जात है, कौन सा पीर है, कौन सा वडेरा है, किसका दरबार है, किसका कारोबार है. Since in this election and the previous one, we've seen that change. People are now beginning to think rationally. People are now beginning to think कि यार फायदा कहाँ आ रहा है, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरी अगली बच्चों के लिए भी. तो जब आपसे ये रैशनल थिंकिंग जो होती है अंडरमाइन हो जाती है, तो अली आप क्या करोगे? फ्रस्ट्रेशन होती है. Absolutely, Meher. और rational thinking is subjective as well. जो आपकी रैशनैलिटी के अंदर है वो मेरी नहीं होगा. जो स्टेट की रैशनैलिटी है वो शायद इलेक्ट्रेट की ना हो. देखिए अली, वो इस वजह से है ना, जब आप मैं हम आ जाते हैं, we're missing out a very important element of the conversation here. Social media has created an equal ground for everyone. जो शायद सड़क पे नहीं आगा, जो शायद सोसाइटी में नहीं आता, because let's face it, socio-economic structures पाकिस्तान में बहुत entrenched हैं.
बहुत ज्यादा मगर इंटरेस्ट। टिकटॉक पे आएगा, मगर वो टिकटॉक पे आएगा। टिकटॉक पे आएगा, ट्विटर पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, और उससे क्या हो रहा है कि वो जैसे जैसे ट्विटर लोगों, और एक्स जो आजकल ब्लॉक हुआ हुआ है, बाय द वे, विदाउट वीपीएन बिल्कुल ब्लॉक पाकिस्तान। हुआ हुआ है, बिल्कुल ब्लॉक हुआ हुआ है, और इसको खुलना चाहिए। इसको ब्लॉक अब तो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर है तो अभी भी मैं कहूंगी कि आप लोग खोल दें, क्योंकि लोग तो फिर भी वीपीएन के जरिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो दैट जब, गोज टू योर पॉइंट, जो आप कह रही हैं कि सोशल मीडिया का एलिमेंट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। दिस इज व्हाट यू बिल्कुल, सेइंग। absolute, and people are finding a way. So ultimately, the state has to recognize that the people have changed. 24 hours before the elections, there was an article that I wrote about how digital activism has changed the playing field. The old playbook cannot apply anymore. It simply cannot. And that needs to be recognized. And जहां तक बात आ जाती है रैशनल थिंकिंग की, अली, इसमें वो बात आ जाती है ना, हमारा एक आइन है, वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। उस डू कॉन्स्टिट्यूशन वी? को जब तक, वी डू, I'm just वी playing डू, devil's वी डू, advocate. वी I डू। don't see it in practice. I don't see it in You practice these just days. answered your own question. You just answered your own question. Go on, go on. When that constitution is not being adhered to, when that constitution is not being implemented, then naturally, देखिए हमने हमारे साथ वाले मुल्क इंडिया में आप देख लें चल रहा है, राइट? यूके में कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, it's unwritten, but it's still Yes. there, right? So accordingly, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ चलेंगे according to the constitution, तो रैशनल थॉट एक स्ट्रक्चर आ जाता है कि भाई आइन के मुताबिक ये सही है या ये गलत है, इस तरह इस्तेमाल करना है या उस तरह इस्तेमाल करना है। अगर मैं आ जाऊं, आप आ जाएं कि अच्छा आइन तो जो मर्जी है, मैंने जो मेरे मुताबिक, जो मेरे एक्सपीरियंस, मेरी पढ़ाई, मेरे बैकग्राउंड के मुताबिक बात आ रही है, जो अली आपके एक्सपीरियंस, आपके पढ़ाई, look, you and I are two different people. We're going to think differently. But if we have a set document that says कि जी आपने इस तरह करना है, linking it to the Ichra incident, आइन में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में है कि women have the right to access to public spaces safely. Why was that not adhered to? Because of people not believing in that school of thought. Yeah, well, People you know know, what? It's kind of tied in, and I think ये आप कहती हैं separate incidents हैं, but it ये इट्रा इंसिडेंट तो हुआ, मगर इट्रा इंसिडेंट से कोई मेरे ख्याल से 3 या 4 हफ्ते पहले एक इद्दत केस भी हुआ आर्बिट्री मीन्स के ऊपर, जहां पे yes, एक औरत की मेंस्ट्रुअल साइकिल्स डिबेट हुई एक yeah, एक yep, बंद कोर्ट के अंदर। now you can have your बिल्कुल, thoughts on XYZ or whatever, but I think no, this is like, if the state is letting go of its own ability to be neutral, to be a provider of justice as opposed to becoming a predator, then these things are going to happen, Meher. एब्सोल्युटली दे गोइंग टू हैपन, बट देन सवाल वही आ जाता है ना कि स्टेट को किस तरह मैनिपुलेट किया जा रहा है और कौन मैनिपुलेट कर रहा है और किस लिए मैनिपुलेट कर रहा है। अब अगर आप चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी हमारा इदारा का कोई रोल था, तो अली ऐसी बात नहीं है। देयर इज अ मच लार्जर गेम एट हैंड एंड देयर इज ओनली सो मच दैट कौन वन से कैन इदारे डू। की बात कर रही हैं मेहर आप? सॉरी। हमारा एस्टैब्लिशमेंट मीडिया हो गया या फ्राइडे अच्छा, ओके, टाइम्स, अगर स्पेसिफिकली आप बात सुनना चाहते हो तो कह देते हैं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं नहीं। नहीं नहीं नहीं, कहे Lekin मत, आप कह सकती it's हैं। fine. We're happy to be to answer all queries and to be held accountable. That, No, but the please, 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 go on, go on, go on. but the point is, Ali, look, there's a larger game at play here. Now, this is where people like you and I have to come forward, despite our differences, despite our ideological stances, despite and recognize it. Recognize that, okay, you know what? We're in this together. There are no winners here. No one's winning. That's the most Listen, important thing. I'll be honest with you. I'll be honest with you, Meher. I don't have an ideological stance per se. Yeah, I'm a Pakistan. I was born in Pakistan, right? true. मैं 19-20 साल मेरी उम्र थी जब मैं यहाँ से गया। हाँ, मैं Ji. conservative household के अंदर मैं जरूर बड़ा हुआ था, That's but my all right. education, both my degrees are from the US, right? Yeah. Undergraduate or graduate. तो और मैं अपने आप को समझता हूँ मैं एक level headed और rational इंसान हूँ कि मुझ में बिल्कुल, ये सलाहियत है कि अगर मैं गलत हूँ कहीं किसी जगह पे, तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा कि मैं गलत हूँ उस जगह पे, बिल्कुल, और मैं अपनी बिल्कुल, अपने आइडियाज किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल, बट दैट्स अब ये देयर, जो आप हम ये लेफ्ट राइट की बात करते हैं, you know, we've seen some of the worst things being done in the name of 100%, neoliberalism under the Biden administration, for example. तो इन लफ्जों के बिल्कुल, कोई मायने नहीं है, ये इन टर्म्स के कोई मायने नहीं है, महर।
नहीं, मायने नहीं है। देखिए अली, आप और मैं हम एक बहुत ही प्रिविलेज्ड पोज़ीशन से बात कर रहे हैं, बहुत ही प्रिविलेज्ड पोज़ीशन से, राइट? लेट्स नॉट फॉरगेट दैट, एंड इसी प्रिविलेज की वजह से आज आप और मैं हम इस तरह खुल के आपस में बात कर सकते हैं ऑन अ डिजिटल रेल्म। Let's even recognize that. We have the privilege that protects us. We have the privilege that enables us. We have the privilege that gives us the opportunity to do so. अगर आप और मैं जाके सड़क पे जाके खड़े हुए और दूसरे बंदे से या दूसरे औरत से जाके यही बातें करेंगे, I mean, the shamelessness of that is just shocking. We have no right to say that because we're not affected by the consequences. Consequences हमने देखे हैं और वो आम आदमी कर रहा है। अब आम आदमी के लिए अली, आपकी और मेरी ये जो बातें हैं कि जी लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है, रैशनल है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है, ये तो यार हम वी आर केटरिंग, we're preaching to the choir. लेकिन या जहाँ मीन्स टू आम एन एंड अगर हो जाए, खाने की किल्लतें पड़ी हुई है लोगों के पास, 40-50 हजार रुपए लोग कमा रहे हैं, फैमिली सर्वाइव नहीं कर अगर पा रही मेरी उनकी। बात सुने, मेरा एक ही होता है कि अगर किसी की जान बच जाती है, अगर थोड़ा सा इंसाफ कहीं ना कहीं आ जाता है हमारी बातों से, तो मेरे ख्याल से हमारा फर्ज बनता है। इट्स नॉट इट्स नॉट क्या कहते हैं, हम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे, हमारा फर्ज है कि हम ये करें कि वी शुड इनेबल अदर्स टू लिव अ लाइफ ऑफ बेसिक डिग्निटी। अली, दैट्स व्हाट इट्स कम डाउन टू। एक जमाना होता था कि 2 रोटी मिलती है, वो नहीं रहा। तो इसमें आपका और मेरा ये बात आ जाती, आपका और मेरा जिम्मा आ जाता है इसमें कि जी हमें जो प्रिविलेज दिया गया है हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। क्या हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन को? आर वी फ्यूलिंग पॉपुलिज्म? आर वी इनेबलिंग मेजोरिटेरियनिज्म जिसके सिर्फ सियासी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते? मतलब आप देखते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज, जो जो बाकी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज हैं, उनका कोई हक नहीं है जीने का खवातीन पाकिस्तान में। खवातीन के हकूक। खवातीन के हकूक, बच्चों के हकूक, जानवरों के हकूक। I mean, you and I, we should be enabling such things. We shouldn't be sitting there lecturing others. This is not about you and me winning. This is about us No, no, we enabling. already have we already have people in Punjab and Islamabad who are lecturing or telling people that we are like the fathers, you're the heroin addicts, so you know what? So I don't need to lecture anyone. Yeah, we don't. people are already people are already lecturing all over the place here. But anyways, let's flip the conversation a bit. Sure. एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी, आप पाकिस्तान में भी रही हैं, बाहर भी, आप ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं। मेरा ताल्लुक अभी भी पाकिस्तान में, हर 3 महीने में पाकिस्तान में होती हूँ। मैं यहाँ पे हूँ, मेरी औलाद यहाँ पे है, तो मेरा आना जाना रहता है पाकिस्तान में तो हर 3 आपका क्या क्या एक्सपीरियंस रहा सिटिंग फ्रॉम आउटसाइड लुकिंग इन, एक्सपैट ओवरसीज पाकिस्तानीज के अंदर क्या सेंटिमेंट है, क्या हो रहा है फिलहाल पाकिस्तान के अंदर, आपका क्या सेंटिमेंट है फिलहाल जो हो रहा है पाकिस्तान में? फिलहाल जो हो रहा है, अगेन मैं वही बात हो रही हूँ, स्लिपरी स्लोप। अभी देखिए, व्हेन यू आउट ऑफ द कंट्री, और क्योंकि ये ट्विटर भी ब्लॉक रहा है, एक्स ब्लॉक रहा है, आपने जो देखा होगा ऑनलाइन स्पेसेस में भी आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पीपल आर वांटिंग टू टेक बैक कंट्रोल, पीपल आर वांटिंग टू टेक बैक नैरेटिव। नाउ इफ पीपल आर नॉट गिवन दैट कंट्रोल, इफ पीपल आर नॉट enabled to feel powerful, we're heading towards chaos, we're heading towards anarchy, right? It took so long for this current government to form. I don't think people are realizing how dangerous that was. Sitting from the outside and looking in, you see the exploitation. You see, when you're in a situation and you're surviving, you don't see it. But when you're removed from it and you see it, I can't tell you how stressful it was. I'm sure you know this as well. Seeing that there is no government, there is nothing happening. How is this country functioning? You see, and that's where there's so many gaps that come in. We're looking at a country that is surrounded by enemies from across all borders, and honestly, it's just luck that nothing really happened. It really is luck. That's what it comes down to. 250 million people, दुनिया की 5वीं मोस्ट पॉपुलस कंट्री, ओनली Yeah. मुस्लिम न्यूक्लियर आर्म स्टेट, और इस पोजीशन में जहां पे लोगों के ये एक्चुअली ये सेंटिमेंट मैं महसूस करता हूं कि लोगों के को ये एहसास है कि कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। हर कोई, यानी अगर आपके बच्चे हैं, फैमिली है, वो बात करते हैं यार बाहर निकलें किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ बाहर पे तो कोई कुछ नहीं मिल रहा हमें, हमारी कोई बाहर के हालात आप जानती हैं, मैं जानता हूँ कैसे हालात है, इतना आसान बिल्कुल, नहीं है जहाँ सर्वाइव तक करना। एक्सपैट, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जहाँ तक एक्सपैट कम्युनिटी है, particularly इधर इधर यूएई में, गल्फ में Gulf में, I'll tell you what breaks my heart. When I get into a cab, a taxi, and the taxi driver is a Pakistani man, and I always talk to them, and he tells me कि बाजी
मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है. That is what kills me. That is what kills me. A master's from Punjab University, globally recognized, is driving a cab in the Gulf. Why? Why? एक Because तरफ the हम कहते Indians हैं have taken on all the other jobs. They're better no, qualified. it's not about the Indians. It's about an educated man who's come from a good family background, similar to yours and mine. Let's be very honest here. Is having to work as a cab driver There's because nothing wrong with being a cabbie. A lot of educated that's Pakistanis I'm not went to. talking about no. I'm not talking about the cabbie element at all. I'm not we I worked as a dentist assistant. That's how I started my career. Okay. My point is that this man had to leave his country with a master's degree because there was nothing available. There was no value In for him. Pakistan. It's not even about the opportunity. It's about कि उसकी value, उसकी कदर ही नहीं थी. और उसको मेरिट की कोई कदर नहीं है ना, मेरिट की कोई कदर नहीं है. It's who you know. मेरिट की कदर नहीं आपका है. बाप कौन है, चाचा कौन था आपका, किसके बच्चे हैं आप. बट अली यू सी ये भी तो मसला आ जाता है ना कि जब आप वादे करते हैं कि जी हम ये करेंगे और हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, लोग मजबूर होकर अब निकल रहे हैं ना. एंड इट्स नॉट इवन अ मैटर अबाउट ब्रेन ड्रेन, इट्स अबाउट कि यार आपके मुल्क की पे कदर क्या रह जाती है, आपके इंस्टीट्यूशंस की कदर क्या रह जाती है. एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी हम लोग चेंज लाएंगे, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम इस तरह का सिस्टम क्रिएट करेंगे. whatever it is, जो भी सियासी जमात हो, it doesn't matter, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं करी. लेकिन when you fail to deliver, you're devaluing your country. And you'll end up with this bright mind who could actually add value to your country, who could actually create a future for the country, for you, in your own country, is here. And the irony is he's sending his money back, still supporting you in the form of remittances. और फिर आप इस तरह की हरकतें करते हो, आप उसको वोट भी नहीं देते हो, उस पर भी बहस शुरू हो जाती है. तो हद करे है क्या ना. बंदा, करे क्या हद बंदा. नहीं हद देना फिर वहां पर बंदा करे क्या, हद देना फिर. So you see, it's not about कि एक इंसान ने उस दिन पे ये किया था, इस दिन पे ये किया था, आप लोगों ने उस पे रिपोर्ट की थी, इस पे रिपोर्ट नहीं की थी, फलानी जमात ने. यार पूरा एक स्टेट फेलियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है. अब 2018 में भी तो यही हुआ था, वो कहते हैं 2018 में भी तो यही हुआ था, इसी अली तरीके मेरी से सब बात चीजें हुई सुने, थी. देखिए सियासत आपने भी पढ़ी हुई है, मैंने भी पढ़ी हुई है. कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जब बात आ जाती है ना, तो आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान की कहानी फर्क है. आपने जो पढ़ी हुई है सियासत और जो मैंने पढ़ी हुई है एकेडमिकली, वो वेस्टर्न है ज्यादा तौर पे, ठीक है. पाकिस्तानी जो सियासत है वो वेस्टर्न मॉडल्स के मुताबिक नहीं चल सकती, और ना ही वो कंपैरिजन आप कर सकते. अब अगर मैं कहूँ, जैसे आपने ये बात की, बहुत अच्छी बात की कि 2018 में भी तो ऐसे ही हुआ था. भाई 2018 के मीशत और थी, सियासी हालात और थे, कानून के हालात और थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और थे, ईसीपी कमीशन का चेयरमैन और था. अब सिचुएशन और है. लेट्स वर्क विद व्हाट वी हैव राइट नाउ. Well, this is the argument then, और ये I think you bring it to a nice intersection segue here कि अभी एक जंग आप कह लें छिड़ी हुई है, अंदर डिबेट छिड़ा हुआ है कि भाई इलेक्शन तो हो गए, हुकूमत भी आ गई, लेट्स bury the hatchet and move on. यानी हम या कैपिटल और कोर्जन तो हर सिचुएशन में रहती है ना. बिल्कुल विदिन द ऑपोजिशन जिनके मैंडेट जो कहते हैं चोरी हुए हैं, वो कहते हैं उनमें से कि हम नहीं मानते. हम नहीं कुछ लोग मानते. कहते हाँ हैं ये हम नहीं ठीक है. मानते, हम क्यों हिस्सा बने बिल्कुल इस गंध का, हम आ गए, सब चीजें हो गई, बिल्कुल मगर हमें बिल्कुल हमारा हक चाहिए. बिल्कुल. कुछ लोग कहते हैं कि चलो लेट्स मूव ऑन, बट द पॉइंट, द कंटेंशन हियर इज के द पीपल दैट आर इन चार्ज आरंट रेडी टू मूव ऑन. सो That's where civil society comes in. तो बजाय कि आप एक औरत के कुर्ते पे बात करें, आप करने ना. हमने धरना कल्चर देखा था, धरना कल्चर से फर्क आया था या नहीं आया था? आया था. एंड उस वक्त भी मैंने लिखा था, बल्कि इंटरनेशनली मैंने लिखा था कि इमरान खान has earned his right to conduct the dharnas that he did, and there was a knock-on effect of that. But that was civil society coming out and being empowered. If there's one thing that we have to credit the PTI, is the level of political awareness that it gave the people, and it gave the people its power back. कि आप लोग अगर करेंगे, अपना सिविक एक्शन करेंगे, अच्छा, आप सिविल आप सोसाइटी की बात करिए. मैं क्विकली, आई नो वी आर एट 35 मिनट्स, no आई no रियली carry on अप्रिशिएट carry कि on मैं बड़ा क्विकली यहाँ पे मेंशन करूं कि ये भी वो था ना, एक क्रिटिसिज्म था कि सिविल सोसाइटी का, स्पेशली ये वुमेन्स राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, औरत मार्च पे तनकीद भी हुई कि भाई पीटीआई की खवातीन जिनमें से अभी भी मौजूद हैं,
आलिया जी, हमजा, सनम जावेद ये बिल्कुल, अभी तक जेल, बिल्कुल। यास्मीन राशिद अभी तक जेल में मौजूद है, पता नहीं कितनी हजारों खवातीन जेल में मौजूद है 9 मई से। उससे पहले भी बलूचिस्तान की आप बात करते हैं, ये सब कुछ महारंग बलोच के साथ क्या हुआ। तो बिल्कुल, कहते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है जो तनकीद की जाती है बिल्कुल। सिविल सोसाइटीज और फीमेल राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की, कि जब इमरान खान के खवातीन सपोर्टर्स के साथ हो रहा था तो इट्स ऑल वेल एंड गुड, कोई मसला नहीं है, कोई आवाज उठाने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी और के साथ ये हो जाए जैसे इजरा का इंसिडेंट, तो भाई कयामत टूट पड़ी। यानी ये क्रिटिसिज्म है। ये क्रिटिसिज्म अगर है तो अगेन अली आई एम सॉरी टू से उन लोगों की तरफ आपने सारी सुना होगा, आई एम श्योर ये जिन क्रिटिसिज्म आपको उन भी। उन जो अगर क्रिटिसिज्म बिल्कुल है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं है, लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपनी रिसर्च किया करें। आप ज़रा थोड़ी-सी आप सिर्फ़ वो ना देखे करें कि लेटेस्ट ट्वीट क्या आ रही है। हर वुमेन्स ऑर्गनाइज़ेशन ने एंड आई एम सॉरी टू से कि हम औरतों को क्रेडिट नहीं दिया जाता है। अभी भी जितना डेटा औरतों पे है, वो इन वुमेन्स ऑर्गनाइज़ेशन से किया है, चाहे वो वुमेन्स एक्शन फोरम हो, औरत फाउंडेशन हो, असर हो, डिजिटल राइट्स हो, इवन औरत मार्च हो, बहुत सारी वुमेन लेड वुमेन ऑर्गेनाइजर्स, वुमेन एक्टिविस्ट हैं, जो वो काम कर रही हैं, जो फ्रैंकली स्पीकिंग स्टेट को करनी चाहिए एंड वो उन मसले मसाइल को हल कर रही हैं जो हमारे मर्दों ने क्रिएट किए हैं। तो ये कहना कि जी एक यूनिफाइड स्टेटमेंट आनी चाहिए हर सिंगल ऑर्गेनाइजेशन से, मेरे बहनों भाइयों, आप प्लीज अपनी रिसर्च कर लिया करें थोड़ी पता है सी। क्या, पता है इस सोशल मीडिया की और इसकी क्या खूबसूरती है महर, जी, कि हम जो बात कर रहे हैं ना, वो जी। एंड में आके आर्टिकल्स भी आएंगे नीचे, नीचे लिंक्स भी दी जाएंगी, ज़रूर लोग आए, अपने भी अली कमेंट्स नहीं करेंगे। कोई मसला नहीं नो है, आई नहीं, लिसन, नहीं ऑफ कोर्स, आई एम ऑल आप अपनी फॉर बात इट। तो उससे कर रही हैं, आई एम नॉट सेइंग, हाँ, बट यू नो नहीं, इसके बाद कॉन्टेक्स्ट ऐड हो जाता है। जैसे आजकल तो एक्स के ऊपर वो यहाँ तक ये बैंड है, वो कम्युनिटी नोट्स भी डाल रहे हैं लोग उसके नीचे। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लुक अली, एक फेज आता है, ठीक है, अभी लोगों जो 2018 से हमने देखा है कि लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज्यादा आई है, यूथ ने अब वो चीज कंट्रोल की है। आई थिंक यू एंड आई रफली आर द सेम एज, आप मुझसे ज्यादा जवान लगते हैं वैसे, बट I'll आई be थिंक 43 in June. I don't know well, about we that. are the same. We are the same generation then, right? And now All right, fair enough. the thing that you and I have seen in our generation, and this is a lament, is that हम लोग war and terror में दब गए। 80s से लेके पहले वो कोल्ड वॉर, सॉरी my apologies, सोवियत सोवियत, इन्वेजन अफगानिस्तान थी पहले यस, तो। पहले वो थी, अभी हम उससे जिया निकल ही साहब, रहे थे। एक 90s का पीरियड आया था, थोड़ा-सा रिस्पाइट आया था, अलबत्ता कराची में जो ब्लड शेड वो हो रहा था वो था। बिल्कुल एमक्यूएम। उसके बाद फिर हम वॉर ऑन टेरर में आ गए। तो हमारी जो जनरेशन है, हम इन बिटवीन हम दब गए थे। लेकिन अब जो जनरेशन 2018 से हम देख रहे हैं, you seeing a different type, are more politically aware. They're more sophisticated in how they communicate. They're more strong in how they want what they want. Ali, you and I probably just wanted कि यार बम ना फाड़ो please. Let's be real. This generation, they know what they want in terms of their rights. They know how to do it. They know how to mobilize. They know how to create. So I think it's a playing field. Social media में अगर articles निकल आते हैं, वो जी आपने उस वक्त ये कहा था, in a way it's good. आप अपनी research ज़रूर करें. Find out what I said. Find out what I wrote. Find out what my work is about. Empower yourself with that knowledge, yaar. That's what I'm saying. Na? You and I, we're here to enable them. And then आगे भी like अब चस आ गया, सब कुछ आपने सीख लिया, अब आप जाएं काम करें सब कुछ प्लीज। कोई कभी नहीं सीख सकता महर, नोबडी नहीं, कैन एवर लर्न एवरीथिंग, सीखेंगे, बट वी कैन ट्राई। हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। सीखेंगे। मैं आई एम वेरी होपफुल, आई लुक एट द नेक्स्ट जनरेशन, आई लुक एट आवर जनरेशन, हम तो दब गए, सो दब गए, और नहीं, हम हम बहुत अगर आप बुरी सही तरह। कह रही हैं, ये जनरेशन होप जरूर देती है, बिल्कुल डिस्पाइट देती ऑल है। दीज डार्क क्लाउड्स आउटसाइड, बिकॉज दे नो सो मच, दे हैव एक्सेस टू सो मच इंफॉर्मेशन। हमारे जमाने में तो स्मार्टफोन्स नहीं थे भाई, हमें तो या तो लाइब्रेरी नोकिया जाके 3310 was the latest one. So the point is कि I do feel hopeful and I think कि ठीक, हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अपने अगर आपने एंगेज करना है डिबेट में, आप ज़रूर करें, लेकिन गाली गलोच ना दें, बिकॉज़ वहाँ पे फिर ये लोग अपने आप को अंडरमाइन करते हैं। दैट्स माय ओनली थिंग। गाली गलोच ना दें, आप ज़रूर आएँ, बात करें, एक प्लेइंग फील्ड है सोशल मीडिया का, इट्स इक्वल। जितना आपका हक है, उतना मेरा हक है, वी आर ऑल इक्वल ऑन दैट। बात करें। इसी वजह से आई थिंक इतनी डिजिटल एक्टिविज्म भी तो है ना। That's why these things end up getting blocked as well, because there's a fear of what can be done, what ideas can be generated.
And when you have communities sort of overcoming differences offline, and not always, but sometimes connecting online, that's where the magic happens. And that's where the fear from those in power comes from. That's a good note to end it on. Thank you so much, Mehr. It was a fascinating Yes, sir. conversation, and I hope कि हम इस चीज को continue रखें. And you're Absolutely. always welcome back on the show. Keep Thank you. writing. I know कि आपकी engagements भी आ रही हैं, Women's Day भी आने वाला है. बिल्कुल. उसके ऊपर भी अपना आप थोड़ा काम करेंगी. तो once you're done with that, we'd love to have you back. Thank you so much, Ali, for the opportunity. Lovely to be here. Khuda Hafiz. You too. Take care. Khuda Hafiz. Allah Hafiz. So there you have it, Mehr F. Hussain. इनको गूगल करें, इनको फॉलो करें. आप सोशल मीडिया पे भी कर सकते हैं. मैं सब डिटेल्स इनकी डाल दूंगा कमेंट सेक्शन के अंदर. एक बार फिर do like, subscribe and share this content. Press the bell notification. Fascinating conversation. Obviously यही बातें हैं, यही गुफ्तगू हैं जो आगे बढ़ानी चाहिए और जो आगे बढ़ा रही हैं हमारे डिस्कोर्स को, डिस्पाइट इतना प्रेशर कंट्रोल करने का, मैनेज करने का, ब्लॉक करने का. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.